तो इसरो का दूसरा मिशन है मई 2019 से ताकतवर रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक और आज भी लगभग 4 साल बाद 100 किलोमीटर निर्धारित की का काफी लंबी थी। ऑर्बिटर कैमरा विश्व का सबसे चंद्रमा की सतह का लगातार पिक्चर। अब मैं आरुषि आप लोग वर्तमान मिशन के बारे में। मिश्रा जी, तो चलते हैं towards Chandrayaan 3, the follow-up mission of Chandrayaan 2. Objective of Chandrayaan 3 mission is the demonstration of safe and soft landing surface. This demonstration aspect for its planetary mission objectives also include of roving capability and conduction of in-situ experiments carried on India's heaviest rocket LBM-3 on the 14th of July. Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 kilometers. ISRO, in mission plan of following the instrumental trajectory approach, carried a total of 5 earthbound maneuvers. The fifth apogee raising maneuver, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 kilometers. At the early hours of mission was carried out, after which composite module began the final leg of its long journey of nearly 3,84,000 kilometers in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the moon. An orbit of 288 by 3,69,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन ऑपरेशन होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरीलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। ईएलआई के तरह एलओआई भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उपग्रह के वेग मान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके, अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। एलओआई के सफलतापूर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान 3 के वेग मान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया। लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। पुनः लैंडर मॉडल के ऑर्बिट को 2 ड्यूबूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25 गुणे 130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को
पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। True indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan 3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan 3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan 3 mission. चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 की तरह ही बनाया गया। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियां चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और propulsion सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स तारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेजर इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का
OHRC पेलोड अब तक काफी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है। के फलस्वरूप लैंडिंग साइट की सीमा को बढ़ाकर 4x2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water rich planets and will also aid the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगे और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एल्टीट्यूड होल्ड फेज, जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के 2 महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर। The rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data
कि हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स ग्रुप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आइडिएशन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग शून्य हो जाएगी। The scientists here at his track are glued to their systems and आप देख सकते हैं the lander velocity shall be brought 1,000 meters per second. Altitude will be brought down from 390. Currently, the laser inertial reference and accelerometer pattern कि हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 21 किलोमीटर बनी हुई है। has traveled a distance of approximately 128 kilometers. The downrange that will be traveled during this phase shall be near 730 meters. हाँ, कर चुके हैं। और हम बंद करते जाएंगे और लैंड के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं कि हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। ये देखा जा सकता है लैंडर मॉड्यूल लगभग 170 किलोमीटर 35 दिशा में चल चुका है।
The mission operations team is analyzing the data. All see the seriousness, the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. Performance, the performance so far seems phenomenal. क्रिएट किया जा चुका है, ये ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं जा रही है। दौरान आपके स्क्रीन से डेटा इसरो के डीप स्पेस पर रियल टाइम में आ रहा है। में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित। Entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. The ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronic module, the TECM, was switched on and lander was oriented to a favorable attitude. हाँ, आप अपनी से देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल जिस शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है रफ ब्रेकिंग पे। फिर मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे-धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं Chandrayaan 3 lander imager display. The lander imager is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being here. Currently, the horizontal velocity has been brought down, and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers, as can be seen on the screen. करीब-करीब अपने आधे सफ़र को पूरा करते जब लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से हो चुकी, करीब-करीब 26.7 किलो। Next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeter. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त। तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। Altitude of lander from ground is currently 12 kilometer, currently 22 kilometer, again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined, we are in the power descent phase. We are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent.
We have currently traveled a downrange of 697 kilometers. The downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. हाँ, क्या आप देख सकते हैं होरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 730 मीटर प्रति गई है। लगभग कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकेंड time you can see the altitude of the lander is just 20 moon surface. It is going to be 7.4 at the end of the rough braking phase. जाएंगे towards attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. You can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers. The distance traveled is 754 kilometers. You can also see the image that the lander imager camera has been providing. 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase. Will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. हाँ रुचि, आप अपनी देख सकते हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10। हाँ, हम अपने हाँ, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हम सभी का उत्साहवर्धन कर दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जुड़ गए। Privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। कि हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। You can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally. We are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced nearly 800 meters at the end of this phase. जैसा कि आरुषि ने बताया, लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग You can see the visual of the lander module. You can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers.
हाँ, आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा की सतह से लगभग 1 किलो कम हो। Are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers, as we can. ये आप देख लैंडर की लगभग किलोमीटर के आसपास है। During the final phase of the power descent, it is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. लाइन ब्रेकिंग बेस एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोग बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं। शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी Of applause indicate that till now the performance has been nominal. We are vertical descent phase 1. Altitude is being brought down from 800 meters and approaching the lunar surface. आप अपने से देख सकते हैं लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आस इस इसके दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. The lander module has begun its descent towards the landing site. अपने स्क्रीन देख सकते जो पथ निर्धारित किया गया है लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे है चंद्रमा के सतह Approaching the vertical distance 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकंड हायोरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद सारे वैज्ञानिकों द्वारा की जाए। हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on. A very good signature for the lander. क्या आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at low velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface.
लैंडर की वेगबान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर कम आ चुके हैं। The Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who is here to encourage us and is critically looking at the visuals. हाँ, आप अपने स्क्रीन पे लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear Department of Space and Chairman ISRO S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. प्रधानमंत्री जी, sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. I request our Honorable Prime Minister to address us. Bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने आस बनते हुए देखते हैं, ऐसी ऐतिहासिक आस की बन जाती, हम अविस्मरणीय इच्छा अभूतपूर्व भारत के शंखनाद का है। इच्छा नए भारत के जयघोष का, मुश्किलों के महासागर को पार करने का, शीत चंद्र 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। इच्छा भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का, अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। धरती पर कल्प लिया और चांद पर उसे पार किया। हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, क्या इज नाउ ऑन द मून। हम अंतरिक्ष में बने। साथियों, इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन हर देशवासी की